Acha, it's raining there, right? Yes. Okay. All right. So all the seasons have their own importance, right? Okay. So Vasanji, can you come on the video? Yeah, I'll ask him to start the video. Okay. Nice to see you, sir. Good to see you. And thank you. Thank you. right. A very good morning to you. All right. Okay. All right. So, all right. So we have, right, 4-5 people are here. And as last time, we had this session on the topic. What was the topic? Be the best version of yourself. Isn't it? Yes. All right. So welcome, Meena ji. So be the best version of yourself. So what did we do? What did we do? I think Ria, I think you can just take a recap on this. Yeah, right? Okay. In the meantime, people will also join, and we'll have more people in the meantime. So we did couple of steps, 2-3 steps we did, and what else we did, and how did you understand the entire concept of being the best version of yourself? So just have a quick recap before we start. So we covered about the things that we like to do every day, like 3 things you asked us to list, and 3 things we like, and what we feel is the purpose of our life, like liking and what we do. And you actually talked about, you actually asked us to list about the emotions. So it was basically to everything was to identify what we like to do, and what we want to do, and why do we get stuck? Like suppose I myself, since I'm telling you very openly, I myself list as pattern that people, I think I'm not wise enough because Right. because of people around me say so, and then I can't be a healer because people around me say so. And I mean, as a healer, I kind of agree also because of the temperament. And so I mean, you can always break up belief systems, but then they become so मतलब कहते हैं ना हिंदी में हावी हो जाता है that you don't work towards changing Right. them, and you live with that belief system throughout your life. Right. Okay. All right. All right. So just to take it forward, thanks for the initial part of it. So just to summarize, before I go ahead, right? We spoke about what are the things that is required for be the best version of yourself, right? So सबसे पहले तो हमने ये बात की थी कि be your best version किसको बोलते हैं, right? So when you live your life genuinely, authentically, ये हम इसको be your best बोल सकते हैं, या be your best version of yourself बोल सकते हैं, या आप साथ में अपना पोटेंशियल अनलॉक कर पा रहे हो, या full use of your inner strength or your potential or your purpose, right? So this is how you lead yourself to being the best version of yourself, and then you're being true to your value system, right? We are very, very important, right? And do those things which brings you sense of happiness. And of course I talk about purpose also, right? So sense of happiness, purpose, joy, whatever you get, so that is how these things will take you to basically lead your life in a much better way. And in the meantime, when you are leading this, you are becoming best version of yourself. That is one part. Now we spoke that we all are WIP. So WIP means, anybody here can tell me, Ria, WIP means? What is in it? I'm just guessing what is in okay. it. Okay. So WIP work in progress. Yes. Work in progress. Work in progress. Awesome. So we all are work in progress, Oh. right? Including me, right? So it doesn't mean that I'm taking a session, so I am also in process, right? So this is the process of every day, how आपने आपको कैसे evolve करते हो, right? But only thing is that certain people are
डूइंग इट बेटर देन अदर्स, बट कंपैरिजन नहीं करना है, राइट। और मैंने एक सिंपल इक्वेशन दिया था जिसमें हमने बात करी थी कि पर जब हम बीइंग द बेस्ट और वर्जन ऑफ योरसेल्फ की बात करते हैं, राइट, सो हम बात करते हैं अपने पर्पस की, हम बात करते हैं कि हाउ करेजियस यू आर, हम बात करते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, राइट। ये 3 चीजों पे हमने बात की थी। अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड टुडे, राइट, मैं 3-4 चीजें और बताऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट 2, right, this is going to be part 2, so let's get involved in this and then go ahead with this. And I had asked you to do certain exercises also while we were in the session, right? So आप I don't know कि आप लोगों ने बाद में की है वो एक्सरसाइज या नहीं की है, ड्यूरिंग द सेशन ही की है या नहीं की है एट ऑल। अगर नहीं की है तो स्टार्ट डूइंग इट। यू कैन गो बैक टू माय अर्लियर रिकॉर्डिंग्स, इससे पहले वाला रिकॉर्डिंग देखो, और वो जो जो एक्सरसाइज मैंने बताई है उसको करो, तभी हमें ब्रेक थ्रू मिलेंगे, राइट। सेशन में आने का फायदा मिलना चाहिए, राइट, एंड यू ऑल आर नो टेकिंग टाइम आउट। और जो भी हम लोग 5-7 लोग 6 लोग यहाँ 10 लोग आते हैं, राइट, इट्स रियली अप्रिशिएबल बिकॉज यू आर मेकिंग टाइम, आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, आप अपने आप को अवेलेबल कर रहे हो इस तरह के सेशंस के लिए। दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, इजंट इट, right? So make use of it, right? So let us go ahead and I will, हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, आज भी हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, राइट। और मैं आज आपको फर्दर इंसाइट्स दूंगा, एक पर्सपेक्टिव्स को और आगे लेके जाऊंगा कि हम बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ या बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, राइट। सो हमने 3 बातें करी थी। हमने बात करी थी कि नो योर पर्पस, राइट, फर्स्ट सबसे पहला नो योर पर्पस। देन हमने ये बात की थी कि embrace the fear of failure, embrace the fear of failure। सबसे पहले हमने पर्पस ढूंढा, अपना पर्पस ढूंढने के लिए we did some exercises। देन उसमें मैंने इनर कॉलिंग की बात की थी। इनर कॉलिंग में we did an exercise where we listed down the skill sets कि आपका क्या स्किल सेट है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था अपना स्किल सेट जो नियरेस्ट है, right, that can be your purpose, that can be your inner calling and you can take it ahead, right, that is one part। now fear of failure में मैंने क्या बोला था कि you have to embrace the fear of failure because जब एक थोड़ा सा डर रहता है, right, ये रिसर्च से भी ये देखा गया कि जब थोड़ा सा डर रहता है तो आप ज्यादा एफर्ट करते हो, राइट, कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। फियर ऑफ फेलियर को एक पॉजिटिव सेंस में मैंने प्रेजेंट किया था, राइट। एंड उसके बाद हमने ये बात की थी कि we need to control our mind, whatever task is being given or whatever the task at hand, whatever the projects are there in hand, right, उसको आपको with focused way में काम करना है rather than not going into mind wandering कि हम most of the time what we do is the task at hand is something else and what we are doing is something else, right। so these 3 things, ये 3 चीजों पे बात की थी। तो आज हम कुछ 4-5-6 स्टेप्स करेंगे। सो स्टेप नंबर 4 we'll start with, so I will share the screen right now, okay, all right, is my screen visible? Is my screen visible? Yes or no? Please tell me, is my screen visible? You can Hello? see. Yes, sir. Your screen is visible. All right. Am I audible too, isn't it? Okay. All right. So step number 4. Now step number 4 is harness your system, right? अब मैं जब सिस्टम की बात कर रहा हूं तो सिस्टम को हम समझते हैं कि सिस्टम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम। हार्नेस योर सिस्टम, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, अच्छे से समझना है, बिकॉज सिस्टम हम बात कर रहे हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस की। थिंकिंग प्रोसेस का मतलब है कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे कि आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम होते हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, राइट। अब ये दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सपेक्टिव फॉर यू। कभी हमने शायद इस नजरिए से या इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं होगा कि जो एक्टिविटी हम करते हैं, हम किस
सिस्टम से करते हैं, सिस्टम 1 से करते हैं और सिस्टम 2 से करते हैं, कौन सी एक्टिविटी हम सिस्टम 1 से करते हैं और सिस्टम 2 से करते हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट सिस्टम, सिस्टम 1 क्या है और सिस्टम 2 क्या है। और अगर आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है तो आपको कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है, कौन सा सिस्टम को आपने आगे लेके जाना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टू सिस्टम ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग प्रोसेस का दो सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 ऑफ द ब्रेन, सिस्टम 1 ऑफ द ब्रेन क्या है? सिस्टम 1 ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली एंड क्विकली with little or no effort or no sense of voluntary control. This is your system 1. Automatically आप एक ऑटो मोड पे आप चल रहे हो, राइट, और इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। वो सारे काम जिसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते, वो सिस्टम 1 है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम 1 इज योर, हमारे ब्रेन का जो सिस्टम 1 है वो रिस्पॉन्सिबल है एवरीडे डिसीजन के लिए। एवरीडे डिसीजन जो आप करते हो, जो परचेजेस आप करते हो, जो जजमेंट्स आप नो यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, दैट इज पार्ट ऑफ योर, आप सिस्टम 1 के एंगल से सोच रहे हो या सिस्टम 1 काम कर रहा है उस डिसीजंस को लेने के लिए, आपका ब्रेन सिस्टम 1 यूज कर रहा है आपका, राइट। ओके, नाउ दिस इज सिस्टम 1। अब सिस्टम 1 के बाद हम सिस्टम 2 की बात करते हैं। अब सिस्टम 2 क्या है? सिस्टम 2 इज ए वे ऑफ थिंकिंग दैट इज स्लो, दैट इज डेलिब्रेट, दैट इज थॉटफुल, दैट इज मोर रैशनल, राइट। जो रैशनल डिसीजंस लेने हैं, जो फोकस डिसीजंस लेने हैं, जो थोड़ा डेलिब्रेट करके, थोड़ा डिबेट करके लेने वाले हैं, वो सिस्टम 2 उस पर फंक्शन करता है। तो सिस्टम 2 इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इज स्लो, डेलिब्रेट एंड थॉटफुल। Okay, for example, system 2 thinking is used when looking, say I've given you an example, from the psychological point of view, system की brain को जैसे समझा जाता है। system 2, let us say कि जब आप ऐसी situation पे हो, जब आप you're looking for somebody, you're looking for your friend or something like, you're using your system 2 of your brain, right? And let us understand this also, when there is this, there is not more space in the parking, आप अपनी गाड़ी कहीं खड़ी करते हो, right? So आपको लगता है कि इस टाइट स्पेस में मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर पाऊंगा, तो आप सिस्टम 2 यूज कर रहे हो अपने ब्रेन का, right? Like parking your vehicle in a tight space, right? तो ये अक्सर होता है, if you are living in metros, ये अक्सर होता है। तो what you are doing is you are using your system 2 of your brain, right? And system 2 is more deliberate and thoughtful. So it is used when making tough decision or thinking out of the box. तो जब हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इनोवेशन की बात करते हैं या कुछ नया थिंकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमारा सिस्टम 2 ऑफ द ब्रेन काम करता है, वो एक्टिवेट होता है। So it is used when making tough decisions or thinking out of the box, right? It is totally opposite from system 1, which is dictated by your automatic and fast way of thinking. फटाफट जो फास्ट वे ऑफ थिंकिंग है वो सिस्टम 1 करता है, और जो डेलिब्रेट है, जो थॉटफुल है, जो रैशनल है, वो सिस्टम 2, हमारा जो सिस्टम 2 है हमारे ब्रेन में, वो काम करता है। तो मे बी अगर आपको कुछ लोगों को पता है, नहीं पता है, तो आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन दैट वी हैव 2 सिस्टम इन आवर ब्रेन, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 कैसे यूज होता है एंड सिस्टम 2 कैसे यूज होता है, राइट? अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अगर बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना है, तो आपको राइट सिस्टम यूज करना है अपने ब्रेन का, राइट? एंड सिस्टम 2 इज मोर को यूजफुल करना है अपने बी और बेस्ट वर्जन के लिए, राइट? तो सिस्टम 2 को हम समझते हैं थोड़ा सा और डीपर में जाके। सिस्टम, व्हेन वी यूज द सिस्टम 2 पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, we instantly become more creative, right? And we challenge the old things, we challenge the old way of thinking also, right? So once we are becoming more creative, once we are becoming more innovative, then we are taking those kind of actions also, na, right? So वो actions हमें अपने be the best version of yourself की तरफ लेके जा रहे हैं, right? So we use it to turn the fun little hobby into a career, right? अभी सेशन से पहले मैं रिया से बात कर रहा था कि उसका वो हीलिंग को एक करियर बनाना चाहती है, राइट?
सो उसकी अगर ये हॉबी अगर करियर में कन्वर्ट हो रही है तो सिस्टम 2 इज बीइंग यूज्ड, तो सिस्टम 2 पे हम काम कर रहे हैं, राइट। सो ये अब जो जब हम सिस्टम 2 पे काम कर रहे हैं तो हमारा बेटर सेल्फ बाहर निकल के आ रहा है ना, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो सिस्टम 2 को हमें यूज करना है, यूज इट टू टर्न ए फन लिटिल हॉबी इनटू अ करियर, राइट। यूज इट टू टर्न योर बिजनेस आइडिया इनटू रियलिटी, राइट। वी हैव लॉट ऑफ आइडियाज, राइट। पीपल हैव, अभी आज की डेट में स्टार्टअप आइडियाज बहुत निकल के आ रहे हैं, राइट। तो स्टार्टअप आइडियाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस आइडिया जो निकल के आ रहा है उसको रियलिटी में कितने लोग लेके आगे जाते हैं? हार्डली फ्यू, इजंट इट? सो यूज इट, सिस्टम 2 आपके मतलब हमारे अंदर सब कुछ है, राइट। सो ब्रेन में आपको भगवान ने जो हमें दिमाग दिया है, इसमें सब कुछ भरा हुआ है, सारी चीजें हैं। हाउ टू यूज इट, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड वंस वी गेट अवेयर ऑफ इट एंड यूज द राइट सिस्टम, we are getting onto it, we are getting onto our the right purpose and the right goal. So use it to turn your business idea into reality, use it to dream bigger dreams, right? 1x से नहीं, 10x, 20x, 50x, ऐसे big picture. So system 2 will take you to have big picture, right? And using system 2 is that powerful, and the simple part is that you can use it anywhere you want, right? It is so powerful. So अब हमें क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ टू यूज सिस्टम 2। अब मैंने आपसे दो बातें करी हैं यहाँ पे, हार्नेस योर सिस्टम। ब्रेन के दो सिस्टम होते हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 में हम क्या करते हैं, सिस्टम 2 कैसे यूज होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल के बताया। अब सिस्टम 2 पे अगर हम काम करते हैं तो सिस्टम 2 हमें अपने बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ या बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स की तरफ लेके जाता है, बिकॉज इट्स सो पावरफुल। इट यू कैन बाय यूजिंग दिस सिस्टम you can convert your hobby into a career, you can convert your business idea into reality, you can think big pictures, right? So bigger dreams, right? अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, it's an obvious question, right? So how to use system 2? How to use system 2? System 2 requires a thing, one thing only, और वो क्या है, वो है your undivided attention। जिस काम को आप कर रहे हो उस पे आपको फोकस करना है, अनडिवाइडेड अटेंशन, नथिंग एल्स। इट इज सो सिंपल, राइट? एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, देन you are using your system 2 of the brain, and it is leading you to becoming the best whatever you are doing, right? So you're being in the best version of yourself, you're leading. So it is that simple. But here is the thing, most people होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि most people do not give their dreams and goals the undivided attention नहीं दे पाते हैं। रीजन whatsoever it is because फोकस नहीं है, अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं है। सो क्या है, हम डिफरेंट वर्ल्ड में ही रहते हैं। एंड लाइक डे टू डे एक्टिविटीज में भी देखो, आप लेट्स से कि हमने एक गोल बनाया है, एक ड्रीम हमारा है, उसको अचीव करना है, बट व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग अननेसेसरी टाइम वेस्टेज इन गॉसिपिंग, समथिंग नेगेटिव हैपनिंग, सोशल मीडिया, राइट? Use social media in an appropriate manner, right? For achieving your goals and dreams, right? Use it in a nice way, na? Use it in a perfect way, use it in a positive way, right? Unnecessary debating, no, कि वो सारी दुनिया को आपने ही ठीक करना है, right? अपने आप को तो ठीक कर लो पहले, right? But अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं है तो आपके ड्रीम्स और गोल्स कैसे पूरे होंगे? You will not be able to fulfill your dreams and goals, isn't it? Right? So there's a very simple thing, undivided attention, fully focused, right? So what is possible for you? Maybe you are good at something, you're good at certain sports, you're good in certain academic areas, right? How fast you can think, you can run, maybe you can run a marathon, right? How fast you can, how high you can jump, right? So it is possible for you. I remember कोई अमेरिकन रनर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं अभी,
उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपना ये रिकॉर्ड तोड़ना है, तो इसके लिए एक उसके पॉसिबिलिटी बन गई। उसने पूरा फोकस पे वो उसने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसी दिन उसके कॉम्पिटिटर ने भी अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी सामने आ गई। दिमाग ये कह रहा है कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। एंड द सेम डे सम कैनेडियन रनर आल्सो ब्रेक द रिकॉर्ड। तो सबने अपना बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ दिया, बिकॉज पॉसिबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लोर किया, सिस्टम 2 यूज किया, राइट। सो यही सिस्टम 2 हमको यूज करना है। हाउ फार कैन यू टेक योर ड्रीम्स? आप कितना ऊपर, कितना अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कितना फोकस्ड अटेंशन दे सकते हो, कितना आगे लेके जा सकते हो अपने ड्रीम्स को, राइट? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड वी डू द अपोजिट. दैट इज व्हाई वी आर स्टक. So give your 100% divided attention to this answer, and don't let false Excuse me, belief, sir. that is, don't let false belief cloud your judgment of what you can accomplish. होता क्या है कि जब हम अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, राइट, हमारा साथ साथ एक बिलीफ सिस्टम जो है वो भी काम करता रहता है कि इसको मैं अचीव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. वी हैव लिमिटिंग बिलीव्स, राइट, सम नेगेटिव सेल्फ टॉक, राइट. So some judgment, something or other keeps on happening. So आपका जो false belief system है वो आड़े आ जाता है, right? So do not let false belief system or cloud your judgment that what you can accomplish. See all the possibilities, right? And once you see the possibilities will increase, right? जैसे ग्रैटिट्यूड की बात की गई, इफ यू आर मोर ग्रेटफुल, योर ग्रेटफुलनेस विल इंक्रीज, योर पॉजिटिविटी, योर परसेप्शन टुवर्ड्स द ग्रेटफुलनेस इज इंक्रीज्ड. पॉजिटिव थिंग्स आप देखने लग जाओगे. चेंज इन परसेप्शन, राइट? बिकॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिफाइन द बाउंड्री ऑफ योर सक्सेस. आप कितना आगे जाते हो, कितना सक्सेसफुल होते हो लाइफ में, दिस विल डिटरमाइन your this particular system will determine, this perception will determine, and you have to avoid your false belief system जो कि आपको आगे जाने से रोकता है. The more you think it is possible, the more things, the more that becomes possibility, or it will become more possible, right? Is it as simple as that, right? So think in those terms. Use the system, right? Use the system. I've given you this awareness of system 1 and system 2, right? So as far as possible, you have to use your system 2 to go ahead. Now we will do a small exercise here, right? Let us do this exercise, and we will the best version of yourself exercise. So आपने जो गोल लिया था, right? आपने जो गोल लिया था, take your previous goal. If you had to make it bigger, how would it change, right? मैंने पेन एंड पेपर के लिए हमेशा बोलता हूं आपको. आई होप यू हैव पेन एंड पेपर. एम आई ऑडिबल? You have pen and paper with you? Yes or no? Do you remember your goal? Could Yes, you please use a pen and paper for this session? do you remember your goal? The most important thing? Yes or no? So what we need to do is think of your previous goal. Think of your previous goal जो आपने बनाया था. अगर उसको हमको large करना है, you have to make it bigger. How would it would change, right? Everyone. And the second part of this is now make it even bigger, 10 times, 100 times. Is that possible? Think of possibilities. Write it down the possibilities. And how does it make you feel? Let's do it right now. Everyone. Am I clear in explaining the exercise? We have talked about our goals, whatever goals you have made it earlier, right? Take your previous goal. And I would suggest everyone that, make it be your best version of yourself का एक आप register या notebook अलग से बना लो, right?
एंड ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैं आपको करा रहा हूं, these are very very impactful, very very impactful if you do it seriously, right? So you need to understand first of all your goal. So जो गोल हमने बात पहले सेशन में भी बात की थी, इससे पहले और उससे पहले भी हमने जब गोल सेटिंग वाले सेशन में भी बात की थी, right? So those goals you can take your previous goal, right? And अगर उसको हमको उस गोल को बड़ा करना है, बिग पिक्चर देखनी है, तो वो कैसे आप वो चेंज होगा, राइट? और उसको आप बड़ा करके देखो, फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज इन दैट व्हेन यू आर मेकिंग दिस बिगर, 10 टाइम बिगर कर लो, 100 टाइम बिगर करो, क्या ये पॉसिबिलिटी है, राइट? अगर पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें और काम करने की जरूरत है ना. सो थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी, think of the possible, and more possibility will emerge. Okay, so we'll have कुछ इसमें टाइम हम लगाते हैं. Let's have 2-3 minutes or 5 minutes maybe. So I'm putting my timer up. Let's have 3 minutes for this. Whatever goals you must have taken, right? उस पे हमें काम करना है, right? Let's make those goals bigger. अगर let's make those goals 10x, 50x, 100x, क्या वो पॉसिबिलिटी बनती है? इस पे भी आप सोचो और लिखो उसको. Great people think big, and you all are great. Think big. Now 20 seconds left in 3 minutes. After that, we'll go ahead. All right. So this was the exercise for making your goals bigger and thinking about the more possibilities and giving you a perspective, or possibility brings possibilities, right? So possible wala thinking process on karna hai hame, right? That is the crux of this particular step. Now this is a step 4. Now we'll go ahead with step 5. Now what does that step 5 says?
Let us understand that. And I want to give you these perspective, and I want to be little slow in that, deliberately, because each step has its own meaning. And if you go deeper into each step will give you the results. And I want all of you to experience results, not only the lecture part of it, right? You need to implement this. Implementation में कहीं आपको help चाहिए, I am there. You can always get in touch with me for any clarification, any questions, right? Because I really want you people have immense capabilities, right? So अपनी capabilities को explore करना है, अपनी possibilities को निकाल के लेके आना है, right? So this is now going forward. So how do we harness? हमने system की बात की, power of system 2 की बात की, harness of systems की बात की, तो हम power जो है system 2 की, उसको अपने goals को कैसे reality में बदल सकते हैं? You might say that little bit of luck is required, right? So before go into the next step, we will talk about, of course, next step is that we need to expect luck. जो top performers होते हैं, क्या वो lucky होते हैं? जो be the best version of yourself, जो अपना best निकाल के लेके आते हैं, the top achievers, top performers, right? Are they lucky? Let us understand that concept also. So how do we harness the power of system 2 to make our goals a reality? Whatever goals you have made, right? So usko reality में कैसे convert करना है? So people say that this particular person got success because he was lucky, right? So luck का क्या definition है? Luck कहाँ काम करता है? Luck कैसे काम करता है? Let us understand that. So that is exactly the step number 5, right? So step number 5 is expect luck. Now I'll give you another perspective of luck. What do you feel? किस्मत, luck को किस्मत कह सकते हैं हिंदी में, right? So किस्मत का क्या रोल होता है अपने सक्सेस में? Is anybody can unmute and just tell me how luck plays a role in any of your success? Do you believe in luck? Or write in the chat box. Anyone? Luck is just luck happens when you set expectations with yourself. Sometimes good luck will happen, sometimes bad luck will happen. So you believe in luck, right? So you believe in luck that suppose you have to achieve your goal. So if you are lucky, then only you will be able to achieve your goals. Are you saying that, Rajwan? Yeah. Or if you are unlucky, then you are not be able to achieve the goal. Something like that. If you are unlucky, also you'll be able to achieve your goals with grit and perseverance. Okay. So you're saying that you need to be lucky to get success, right? In nutshell. Okay. So let us understand this luck part. Now it's time to question our unconscious expectations, right? It's time to question our unconscious expectations. Top performers believe they are lucky. They believe, उनका belief system ही बोलता है, उनका belief system ही बोलता है कि वो lucky हैं, they are born lucky. They believe in the power of possibilities, and that is why the luck favors them. Top performers, top achievers, उनका belief system ही कहता है कि they are lucky, they are born lucky. And they believe in the power of possibilities. They harness the power of possibilities. They harness the system. They use the power of system 2. And luck is nothing but the opportunity meets the preparedness. When you are prepared for the opportunity will come. If you are prepared, you will take it. It will get you success. But if you are not prepared, when the opportunity will come, you will not be able to hang on it, and you will not be able to derive fruits from it, right? So opportunity will come and go.
So opportunity once lost, it's lost, right? So it's not, you'll not go ahead in becoming the best version of yourself. So let's understand the concept of luck. I'm giving you this perspective again. So top performers believe they are lucky. They believe in the power of possibilities. But have you ever thought why? वो ऐसा क्यों सोचते हैं? Their expectation of luck changes their behavior. वो सोचते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ लक है कि जैसे वो इस मोड में आते हैं, इस थिंकिंग मोड में आते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, एंड दे स्टार्ट सीइंग द अपॉर्चुनिटीज, राइट? दैट्स हाउ दे सी अपॉर्चुनिटीज, राइट? सी द डिफरेंस बिटवीन a normal individual, an average individual, or the person who has gone on to top or successful in this or in her or his area, right, or his field. See the difference. Their expectation of luck changes their behavior and how they see the opportunities. As मैंने पहले कहा कि opportunities, जो luck is nothing but opportunity. जहां पे opportunities जो है वो preparedness से मिलती है, वो luck बन जाता है. Right? Let us understand it a little deeper. Researchers have found that our belief about luck fall into two categories. So two categories वो कौन-कौन सी है? एक है stable और एक है fleeting. एक है stable और एक है fleeting. अब stable में क्या है? Stable में people who believe in a stable form of luck believe that we are either lucky or unlucky. या तो हम lucky हैं या unlucky हैं. ये स्टेबल फॉर्म ऑफ लक है, राइट? और एक पर्सपेक्टिव ये है कि पीपल हु बिलीव इन फ्लीटिंग टाइप ऑफ लक, टू टाइप ऑफ लक, स्टेबल एंड फ्लीटिंग. सो स्टेबल में पीपल थिंक आइदर वी आर लकी और वी आर अनलकी. सो पीपल हु बिलीव इन फ्लीटिंग टाइप ऑफ लक बिलीव दैट लक कम्स एंड गोस. इट्स रैंडम, इट्स ऑफन अनप्रेडिक्टेबल, राइट? सो व्हाई डज इट मैटर? The question here is, why does it matter? Isn't it? It's a normal question comes into mind. कि why does it, क्यों matter करता है ये? So matter इसलिए करता है. Let us understand this. Why does it matter? It turns out that people with a stable form of luck had a significantly higher drive to succeed than the people who saw luck as fleeting. जो स्टेबल फॉर्म ऑफ लक बिलीव करते हैं, दे इनहेरेंटली उनका जो ड्राइव है, सक्सेस रेशियो है, हाई है, बिकॉज दे आर हाई ड्राइव टू गेट सक्सेस. दे आर सिग्निफिकेंटली हाई, हैविंग हायर ड्राइव टू सक्सीड, एंड दैट इज व्हाई दे सक्सीड. दैट इज व्हाई दे बिकम टॉप परफॉर्मर्स इन देयर एरियाज और इन देयर फील्ड, राइट? So believing in luck makes you successful. So अगर आप लक में बिलीव कर रहे हो तो वो नेचुरली आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है. और लक क्या है? लक में वो जो मैं बॉर्न लकी की बात करी, वो मैंने ये बात करी कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो और अपॉर्चुनिटी आती है, लक इज नथिंग बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड द अपॉर्चुनिटी कम्स, यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, विल टेक यू टू द goal. You will achieve your goal. So believing in luck makes you successful. That's a thought. So inherent thought है वो luck का उनके लिए. Top performers के mindset की बात कर रहा हूँ, right? That is because the stable luck believers felt that luck was in their control. They never said they're unlucky. बात ही नहीं करी उन्होंने. Inherent mindset. Because the stable luck believers felt that luck was in their control from the beginning. And that they use that kind of belief to their best of their advantage, and that is why they become more successful, and that is why they are successful. आप किसी भी top performers, top achievers, किसी भी top sports person, top any person who is on top of their field, right? उसकी history उठा के देखो आप, उसका background उठा के देखो आप. The way he or she thought things is little different than what we individuals as a normal human being do. वो थोड़ा सा उनका सोचने का तरीका, उनका पर्सपेक्टिव
towards the opportunities, unka kaam karne ka tarika, they all are little different from us. That is why they have become so successful. The people who saw luck as simply fleeting, stable और fleeting की बात की, जो stable luck में believe करते हैं, उन्होंने best of the advantage लिया opportunity के and they become successful. The people who saw luck as simply fleeting did not care about luck. Why? Believe in it and it's a random occurrence. कि कभी कभी होता है luck, कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं काम करेगा. So if you believe you're lucky, the good things will start happening to you. There is no doubt about it. But yes, luck, be prepared to get the opportunity. The opportunity keeps on coming. No, people are giving opportunity. Universe is giving you opportunity. The opportunity is coming to you. You're taking that opportunity, making full advantage. Using your mindset of being lucky, right? Your belief system is that you are born lucky, you are lucky, right? And luck is nothing but, opportunity meets the preparedness. So if you believe you're lucky, good things will start happening, and it will start happening from today. Got it? So this is step number 6. Now, I want you to write certain things here. Right, this is a kind of a journaling also. This is part and parcel of my session. So let us say, number 1, we'll have 5 minutes onto it. Do you think you are lucky? What kind of luck do you have? That is number 1 exercise. What kind of luck do you have? First of all, do you think you are lucky? What kind of luck do you have? Right? And then think of all the reasons you are lucky. Think of all the reasons you are lucky. Think of all the blessings you are lucky. List them out. Right now, what you do is list them out, and now after this session, अभी आप इसको list out कर लो. 4, 5, 6, 10 जो भी आपको समझ में आ रहा है. Think of all the reasons you are lucky. Pardon? Are you saying, Rajvin, something? Okay. All right. Think of all the reasons you are lucky. List them down, and after the session, what you need to do is, you have to post somewhere where you can see them regularly and be reminded of your luck. Right? This is a crucial exercise of getting near to your success of your area in your field, right? So do it. So I will start my timer right now. I am giving you 5 minutes. Let's do it 5 minutes. What I am suggesting is that you identify, first of all, you identify, what will you identify? That do you think you are lucky, right? I've given you a narrative of luck, right? So do you think you are lucky? What kind of luck do you have, right? Write whatever it comes to your mind right now. बहुत ज्यादा इस पे सोचो मत, अब लिखो इसको, और then start finding out, start identifying कि all the reasons you are lucky. List them out, 4, 5, 6, 10 जितने भी अभी लिख सकते हो. And after the session, what you need to do is you need to post them somewhere where you can see them regularly. So I'm starting my timer. Five minutes activity.
So you have to write, do you think you are lucky? What kind of luck do you have? Right? Maybe we talked about two kinds of luck, stable and fleeting, right? And then think of all the reasons you are lucky, list them out. Right now you list them out. That's the thing you would need to do. अभी आपको वही करना है. One minute remaining. All right. Okay. So I hope you must have identified certain things regarding luck and how lucky you are, right? And what kind of luck do you have? All right. So you might be wondering that am I doomed to be failure if I don't believe in luck? अगर आप believe नहीं करते हो luck में तो क्या मैं failure हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? So this question might be coming in your mind, right? Yes, you would be, but if luck was the only thing that influenced your performance, right? Along with luck, there is even more important factor. So luck अपनी जगह है और luck का मैंने आपको बता दिया perspective. दो तरह के narratives हैं, stable and fleeting. And उसके बाद जो luck की definitions की अगर हम बात करें, अगर आप prepared हो और opportunity आती है, अगर आपने उसको grab कर लिया, and then that's a kind of a luck plays a role in your life, right? And top performers, जो top achievers होते हैं, they feel they are born lucky. They use their belief system of being lucky and they work on themselves and they achieve their best, and that is how they come out with the best version of themselves. Okay, now as one more perspective I'm giving it you, right? If luck is the only thing, or luck was the only thing that influenced your performance, that is certain part of it, right? Along with luck, there's another important factor, and that factor is expectations. So step number 6 would be assimilate your expectations. When I say assimilate your expectations, you know about your expectations. अपने expectations को अपनाओ. Expectations अपने आप से अपेक्षा करना, अपने आप से expect करना. So ये इस पे भी हमको this is a step, one step of being the best version of yourself. Now
Now let's get this. No, so whether you believe this was luck or not, science says, ये research से back किया हुआ है ये वाला concept. Science says it does not really matter. Science कहती है कि whether you believe this in luck or not, science says it doesn't really matter. What really matters is your expectation about the outcome. आपका जो outcome है उसके बारे में आपकी expectations क्या है? That is more important, right? What really matters is your expectation about the outcome. It is not luck that determines your success. It is your expectation that determines your success. Got it? Now, in fact, there is a name for this type of expectation phenomena जो है, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका एक नाम है, right? इसका एक नाम है, ये है, इसको बोलते हैं पिग्मेलाइन इफेक्ट. पिग्मेलाइन इफेक्ट. अब ये पिग्मेलाइन इफेक्ट क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड in brief what it is, right? What is this effect? एक रिसर्च किया गया था एक्सपेक्टेशंस के ऊपर 1960 में, राइट? हार्वर्ड में किया गया था ये, और वो रिसर्च किया था रॉबर्ट रोसेंथाल ने, राइट? और उन्होंने एक टीचर्स और स्टूडेंट्स की कम्युनिटी पे रिसर्च किया था. दे आस्क्ड टू स्टडी टू डिटरमिन whether teacher expectations would influence a student performance in the classroom. This was the research done. Actual में ये रिसर्च किया गया 1960 में, right? Whether उसमें टीचर्स की जो expectations हैं क्या वो इन्फ्लुएंस करेंगी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इन द क्लासरूम, और किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया गया. एंड द कैच वाज, अभी वो कैच भी बताता हूं. उन्होंने दो पैरामीटर्स को लिया. रोसेंथल टोल्ड टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को बता दिया कि सर्टेन स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम वर एक्सपेक्टेड टू बी हाई अचीवर्स और टॉप परफॉर्मर्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड हार्वर्ड टेस्ट. उन्होंने जो लिया है उसके बेसिस पे उन्होंने टीचर्स को बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लासरूम में जो कि दे आर एक्सपेक्टेड टू बी हाई अचीवर्स, राइट? उनका बेस्ड ऑन द टेस्ट दे हैव गिवन इन द हार्वर्ड, राइट? एंड दूसरा, द कैच क्या था जिसकी मैं कैच की बात कर रहा था? दीज हाई अचीविंग स्टूडेंट्स वर चूजन कंप्लीटली एट रैंडम. रैंडमली इन स्टूडेंट्स को चूज किया गया था, एंड दे वर नॉट स्मार्टर, नॉट मोर स्पेशल एंड नॉट मोर टैलेंटेड देन other students. Okay, so ये कैच था. और इसकी फाइंडिंग्स क्या निकल के आई? इसकी फाइंडिंग्स से निकल के आई the amazing result which came out that these high achieving students actually had much better academic performance than their peers, and all because of expectations. तो एक बड़ा consolidated research हुआ है expectations पे. It's backed by the research and the science that हमारी expectations जो है वो हमें आगे लेके जाती है अचीव करने में, टॉप परफॉर्मेंस बनने में, टॉप परफॉर्मेंस करने में. जो है ये हमारी एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, नाउ एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी अवॉइडेड. दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, राइट? एक्सपेक्टेशन करना, अपेक्षा करना, अपने आप से अचीवमेंट की अपेक्षा करना, बट इट कैन ओनली बी चेंज्ड, राइट? बट वंस वी आर in process, or we are understanding, or we are doing work on ourselves for being in the best version of, or how to be the best version of yourself, expectations का role एक very very important role they have. Expectations. Okay, now, so if you are wondering how would I become a better version of myself, expectations के perspective से, well, you don't have to believe in luck, rather try believing in expectations. A lot of our expectations कहां से आती है? Lot of our expectations come from other people जो हमें expectations अपने बारे में देते हैं. So lot of expectations come from our friends. So learn how to make great friends as an adult. हम अच्छे दोस्त कैसे बनाएं, and avoid toxic ones. To change others' expectations about you.
जो दूसरे आपके बारे में जो अपेक्षा रखते हैं या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. It's one of the things, a lot of our expectations come from our friends. Man is a social animal, हम interact करते हैं, right? So learn how to make great friends and avoid toxic ones. So the best version yourself exercise क्या होगी यहाँ पे? Now identify what positive expectations do others have on you. I've given you a perspective here again, right? कि लक की जगह लक का अपना रोल है, लक का एक माइंडसेट है टॉप अचीवर्स का, और एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें टॉप अचीवर्स काम करते हैं, राइट. बट लक के साथ साथ हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस पे भी काम करना है. एक्सपेक्टेशंस कैसे आती है? एक्सपेक्टेशंस आती हैं जब हम दूसरों से बात करते हैं. दूसरे लोग हैं जो अदर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, राइट, वो हमारे बारे में क्या अपेक्षा रखते हैं, राइट. सो यहाँ पे हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस डू अदर्स हैव ऑन यू, फ्रॉम whom do you from whom do they come from. वो एक्सपेक्टेशंस कहां से आती हैं, एंड विच वन आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. और कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो रोक रही हैं आपको बी द बेस्ट इन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, right? So you need to identify here this, and what do you expect from yourself. So expectations others have on you, that is number one. And कौन सी ऐसी expectations हैं जो आपको hold back कर रही हैं, right? And what do you expect from yourself? How can you make your expectation aligns with your goals? आपकी एक expectations है, आपके एक goal है, right? आप एक्सपेक्टेशंस और गोल्स को कैसे अलाइन कर सकते हो? जो भी अभी आपको समझ में आता है आप उस पे लिखें. देन वी विल हैव ए discussion later on in this if you have completed on this. So I'll give you another 5 minutes, and before we end this session, I would like you to identify this. What positive expectations do others have on you? कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको रोक रही है? वो एक्सपेक्टेशंस कहां से आ रही हैं? What positive expectations do others have on you? Maybe it can come from your parents, it can come from your friends, your relatives, your brothers, sisters, right? और कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो दे आर होल्डिंग यू बैक? And then the second part is, what do you expect from yourself? आपकी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और हाउ किस तरह से आप अपने गोल्स को और अपनी एक्सपेक्टेशंस को अलाइन कर सकते हैं? Just imagine if your expectations and goals are being aligned, और वो अगर हो गया तो आपका रिजल्ट कहां का कहां पहुंच जाएगा. तो हमने अभी आज जो स्टेप्स किए हैं, हमने हार्नेस योर सिस्टम, एक्सपेक्ट लक एंड एक्सपेक्टेशन.
I hope people are doing it. We are coming to 1 minute is left. All right. Okay. All right. Now I'm leaving it here. Okay. So with this, I end this session of today. We will continue the same topic, the last in the series, Be the Best Version of Yourself, part 3, where we would be talking about 2 or 3 more steps. All right. So अभी हमने 6 स्टेप कर लिए, राइट? जो मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले सेशन से, सो 3 स्टेप हमने पहले किए थे, राइट? 3 स्टेप हमने आज किए हैं. We have worked on know your purpose, we have worked on fear of failure, then we have worked on your control your mind, then we have worked on harness your system, then we have then worked on luck part, luck versus opportunity, and then expectations. All right. So we'll have more steps next time in part 3. Okay. And before I end the session, do you want to listen some music, some enlightening music? Give me yes or no. All right. Okay. All right. So let me play this for you before I end the session. Just a sec. All right. So this is coming in Hindi. Are you able to hear this? Voice is coming? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay. So let's listen this music before I end the session. करने से होगा. बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी. बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी. बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी. जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया. ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया. तो उठो, चलो आगे बढ़ो. जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा. बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा. बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा. घुट-घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा. कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं. कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं. संघर्ष करो, डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना. अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना. एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी. दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी. तो उठो, चलो आगे बढ़ो. जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा. बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा. बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा. घुट-घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा.
खंजर भोंकेंगे, तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो, खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं, एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी, दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा, बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा, बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा, घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। Thank you so much. Any questions? Anyone have? Otherwise, we'll end the session. So thanks for this session and thanks for a fantabulous song. So I think we are prepared for our goals, and definitely we'll work hard and we'll be Yes. more focused. And Yes, thank you so actions will much. give you results. Actions. लेंगे तो results मिलेंगे. So let's do the action. करने से होगा. Hope Okay. you get a lot of copies, a lot of photos of journaling, so you can always guide us, and then we take action Sure. accordingly. All right. So thank you, everyone. Thank you. Thanks a lot, Shabana ji. Thanks, everyone. All the best. Yes,